Assalamu alaikum. Today we have the cell wall inhibitors. So, in cell wall inhibitors, there are several drugs including penicillin, cephalosporin, and beta-lactam antibiotics. So, overview: some antibacterial drugs selectively interfere with synthesis of bacterial cell wall, a structure that mammalian cells do not possess. The beauty of the antibiotics is that they are not very much harmful for the normal mammalian cells, and because there is a difference between the structure of normal mammalian cell membrane and the bacterial cell wall. So the cell wall is composed of polymer called peptidoglycan. They consist of glycan units joined to each other by peptide क्रॉस लिंक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स करते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल वॉल की इसकी सिंथेसिस के लिए उसको ब्लॉक कर देते हैं ड्यूरिंग रिप्लिकेशन फेज। जब उनको ब्लॉक करते हैं तो दे यूजुअली डिस्ट्रॉय एंड कॉजिंग द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। अब ये देखें, these are two types of the cell wall. The one is gram negative and other is gram positive. And you can see that these are the peptide glycans. These are they secrete some enzymes, and these enzymes are responsible for the synthesis of their cell wall. And penicillins are the one of the basic drugs which were evaluated and discovered in 1939, and these agents were responsible for the saving of the millions of the life when the World War II was initiated. These are the substances which either kill or suppress the growth of microorganisms. Although penicillins were discovered in 1928 but clinically available in 1941, and these agents, penicillins, were discovered by the Alexander Fleming and through some accidental trials, and were available in 1939 to 1941. And these penicillins contain basically बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चरली। जो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, और दैट रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। ये हिस्ट्री है जो हाउ द पेंसिलिन्स वाज डिस्कवर्ड, और जो है ना उस एरा में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने वो किया। एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग गॉट द नोबेल प्राइज। Classification of penicillin, ampicillin, amoxicillin. Basic structure of the penicillin consists of the four-membered beta-lactam ring, which is attached to the thiazolidine ring and or side chain. Members of this family differs in R substitutes attached to 6-amino penicillinic acid residue. The nature of this side chain affects the antibacterial spectrum, stability to stomach, and susceptibility to bacterial degradative enzymes. This is the structure of penicillin. They interferes with the last step of the bacterial cell wall synthesis. Since penicillin resembles with proton portion of the peptidoglycans strand and compete with penicillin binding proteins which catalyze transpeptidase and facilitates cross-linking of the cell wall, the resulting in the formation of weakened cell wall and ultimately cell death. यहाँ आप देख सकते हैं that these are the transpeptidase enzymes. They usually block the activity of these enzymes, and this leads to the destruction of the cell
wall, last stage of the cell wall. Here it acts at the cell membrane. There are two types of the penicillin, some semi-synthetic and natural penicillins. Natural penicillins जो सेमर ज़दा वो था, वहाँ से वो जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी दो फॉर्म्स हैं, पेंसिलिन जी एंड पेंसिलिन वी. पेंसिलिन वी is available in the oral form and penicillin G is available in the injectable form. Penicillin G is more powerful and effective as compared to penicillin V. Penicillin G can penetrate the blood-brain barrier. The most effective coca are very much sensitive to penicillin G. And semi-synthetic forms of penicillin, which are very much effective, are the ampicillin and amoxicillin. But due to the availability of beta-lactamase enzyme, nowadays they are become obsolete. But after the combination with clavulanic acid, they are still first-line agents for very broadly spectrum of the bacteria. Addition of R groups extends from gram-negative antimicrobial activity of penicillin, including H. influenza and E. coli. ये जो स्ट्रक्चरली जो पेंसिलिन बनाई गई है, जो हमने जो नेचुरल पेंसिलिन्स थी उसको स्ट्रक्चरली सेमी सिंथेसाइज करके जो उनके अंदर जो डेवलप किया, 6 अमीनो पेंसिलिक एसिड रेजिड्यू और दाखिल किया गया, उससे ये क्या होगा कि उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी जो बढ़ गई, जो कि पहली नहीं थी. Ampicillin, with or without addition of gentamicin, is the drug of choice for gram-positive bacilli. एंड अदर्स आर एंटी स्टेफिलोकोकल पेंसिलिन्स, और उसके अंदर है मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन. हालांकि मेथिसिलिन जो है ना MRSS मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोका स्ट्रेन आ गई है, लेकिन अर्लियर पीरियड में these penicillins were very effective. They are beta-lactamase penicillin resistant penicillins. Their use is restricted to the treatment of infections caused by penicillinase producing staphylococci. इसके वैसे तो ये जो पेंसिलिन है ये बहुत ही सेफ एंड साउंड ड्रग्स हैं, और दिनों से महीनों तक जो है ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट स्टरबॉर्न इन्फेक्शंस, एंड दे आर वेरी मच सेफ. बट हाउ एवर, अच्छा इसका क्लिनिकल यूजेस है. क्लिनिकल यूजेस उसके बड़ी वाइडली हैं, फ्रॉम यूरिनरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस. पेंसिलिन जी can penetrate blood-brain barrier, typhoid, bacillary dysentery, and syphilis and gas gangrene. इसके वैसे तो ये बड़ी सेफ एंड साउंड ड्रग्स हैं, और ये दे कैन जो है ना ओकेजनली यानी कि 100 में से 5 से 10 पेशेंट्स को जो है डायरिया करा सकती हैं. Therapeutic uses of amoxicillin, hemolytic streptococca, staphylococcal, meningococcal, pneumococcal infections, and prophylactic uses against pyogenic complications of viral diseases, postoperative procedures. They are active against Pseudomonas urea and Urizinoa and protease, which are not inhibited by penicillin G or amino penicillins. They are specifically designed to combat these organisms. They are less effective against E. coli, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, and not effective against gram-positive cocci. So that we can say the carbonicillin among those penicillin which is narrow, possessing narrow spectrum. Carbonicillin is neither penicillinase resistance nor SS resistance. It is orally inactive and rapidly excreted through the urine. And other is uridopenicillin. This anti-pseudomonal penicillin about 8 times more effective than carbonicillin. Has got
good activity against Klebsiella enterobacteria in some bacteriides, frequently employed to treat gram-negative infections. अच्छा, बीटा लैक्टम रिंग जो है कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं which contains beta lactam ring, and such type antibiotics are penicillins, cephalosporins, and there are other cell wall inhibitors. And beta lactam ring is basically the structure found, chemical structure found in such of antibacterial drugs, and beta lactam ring is responsible for the spectrum and efficacy and killing effect of the bacteria. And other is beta lactamase. Beta lactamase is enzyme which is being produced by certain bacteria. अब ये है कि पेंसिलिन की वर्ल्ड वाइड यूजेस की वजह से एक दूसरी स्ट्रेंथ जो है ना वो बैक्टीरिया की प्रोड्यूस हो गई, उसको कहते हैं बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. एंड बीटा लैक्टामेज जो है वो एक एंजाइम है which is responsible for the degradation and inactivity of the beta lactam ring, and this is the pathway how these antibiotics are become resistant to certain amount of bacteria. ठीक है. तो beta lactamase are family of enzymes produced by many gram negative and gram positive bacteria that inactivate the beta lactam ring. Inactivate the beta lactam ring means inactivate the whole antibiotic molecule. The clavulanic acid is the molecule of the drug which is responsible for the combating in inactivity of this enzyme. जब वो enzyme की activity बंद हो जाती है तो फिर again if there is availability of certain antibiotics which contain beta lactam ring, they become powerful, and again these antibiotics become very powerful against such type of bacteria. So therefore clavulanic acid is combinedly used with the amoxicillin. जब clavulanic acid और amoxicillin की कॉम्बिनेशन हो जाती है तो उसकी फिर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एंड देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड देयर लेथल इफेक्ट आल्सो इंक्रीज्ड. बट कैल्वियनिक एसिड इज इटसेल्फ कैन नॉट किल द बैक्टीरिया. वो उसकी खास अलग से बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है अदर ड्रग्स की है, जिस तरह एमोक्सिसिलिन यानी कि पेंसिलिन एंजाइम्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिर्फ जो है उस बैक्टीरिया जो बेटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं. Clavulanic acid has a rapid oral absorption in 60 bioavailability when injected, eliminated by glomerular filtration. And this is again a very safe drug. Addition of clavulanic acid stabilizes the activity of amoxicillin against beta-lactamase producing Staphylococcus aureus, H. influenza, Neisseria gonorrhea, E. coli, and Salmonella. Augmentin, and this is the combination of the clavulanic acid and the amoxicillin. Is still a drug of first line agent against many skin and soft tissue infection and meningitis and other forms of the disease. They are very safe. They are same as amoxicillin, and they only the few amounts of the patients can have some like diarrhea, candidus, vaginitis, and rashes. Uh, very few people report. Otherwise, these are very safe and effective drugs. ओके, ये आपका हो गया, और ये फर्स्ट टाइम मैंने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया है. एंड प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा और इसको जो है ना लाइक कीजिएगा, तो मेरी हौसला अफजाई होगी. तो फिर आइंदा में और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को पहुंचाऊंगा. और दिस वीडियोस आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड बाय मी फॉर माय स्टूडेंट्स ऑफ खैरपुर मेडिकल कॉलेज. एंड अस्सलाम वालेकुम.